Hello. So today we will discussing a very good number in your physics. That's from your pure rolling concept and also from your rotation, and it is a combination of two topics, that is rotation and your work energy and power. So let's move, guys. Let me share the screen with you, and in front of you this is your number. Okay, see number 17. So here in front of your screen, okay, the question tells us that the ball, there's a ball A that rolls down without slipping. What is the meaning of without slipping? Which is at rest. It is already explained that at A, this ball is at rest and it is moving along AB. Okay, let me draw the figure little well. Okay, suppose this is your ground. Okay, and this is the height HA, it is given. And here you have the ball, and this ball is at rest. Most important thing, mark each and every sentence and each and every wordings. Okay, and it will run along AB. This part is A, while the middle part is B, and the last part will be what? C. The last part is nothing but C. So now you need to understand various things. What are those various things? First, without sleeping. What is the meaning of without sleeping? Then we will go for let's read at the question, then I will go for without sleeping concept. Okay, so what the ball is doing, see, along AB having friction means this part, okay, this part is having friction. Whatever you are looking at is having what? Friction. This part is having what? Friction. Okay, so ये वाला part A से B तक आपके पास क्या है? Friction है. So in this part, what will happen? The body is undergoing rotational motion without slipping. That means that it will undergo pure rotation. We'll learn about that. It rolls to a maximum height of HC. Okay, it will roll to a maximum height of SC. See, from B to C there is no friction, so there is something SC. We want to find the relation between HA and SC. We will find it out. Okay, for BC has no friction. This is a very important point. BC has no friction, yet there is no friction here. That is mu is equal to 0 here. Okay, so here you can see we are having what? Kinetic energy at A, which is 0, as it is already explained that it is at rest. Kinetic energy at this A is 0. And definitely here you are having kinetic energy at B, KB, and we are having kinetic energy at C. Okay, so it rolls up to a maximum height, that is KC, maximum height. Okay, this is KC. Okay, so KC, we'll discuss about it. Okay, then we are having few relation. Okay, let's talk about A first. Forget about HA is SC or something different. Let's learn whether at C is rolling up to maximum height, whether at C our kinetic energy is 0 or not. So before discussing this question, let me first explain you what is the meaning of this without sleeping concept. So without sleeping concept is nothing but it is just about the pure rolling. So what happens in pure rolling? If you don't know, let me explain you what happens in pure rolling. When there is some frictional plane, if this is having some friction mu, okay, if it is having some friction mu, and here what is happening, we are having what? For angular velocity omega, and simultaneously we are having some linear velocity v. So what will happen at the contact point? We will be having two different kind of velocities in the different directions. Okay, at the contact point we are having this as omega r. Okay, if r is the radius, then we are having it omega r, and also here towards the forward direction, what we are having? We are having some forward velocity v. Okay, so you're okay with this much? This much concept is enough for you at present. So what is happening in case of pure rolling? In case of pure rolling, we know that, okay, pure rolling, we know that, हमको क्या मालूम है? We know that हमको ये मालूम है कि omega r will be equal to v. So that means that v relative at the contact point, okay, is 0. कहाँ पे 0 है? At contact point. कहाँ पे 0 है यार? Contact point पे. Contact point. समझ में आ रहा है? फील आ रहा है इस चीज का? तो यहाँ पे 0 है, 0 वेलोसिटी से अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन, यहाँ पे जो टॉर्क गिराना चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्शन टॉर्क ऐसा
टॉर्क नहीं गिरा रहा है। प्योर रोलिंग में क्या हो रहा है ना, आपका रोटेशन इंक्रीज नहीं होगा। प्योर रोलिंग में जो वेलोसिटी जो ओमेगा आर से जा रहा होगा वही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है, तो प्योर रोलिंग में और यहाँ पे स्लीपिंग का कंडीशन नहीं है। सो नाउ जस्ट रिमेंबर दैट द बॉडी व्हाइल गोइंग फ्रॉम सी द बॉडी व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिस A to B will possess the body will possess the body will have, let me write, will have what? Kinetic energy is equal to what? K at what? Both Ke due to translation plus Ke due to rotation. Okay, that is, if I will write it, what? Half mv square and half I omega square. Okay, so what will happen now? It is very important for you guys, very, very important. So here there will be no loss of energy, no loss of energy, means whatever the mgha is there, it will be fully converted into Ke net, that is equal to Kb. So just remember that Kb is maximum, Kb is greater than Kc. Sir, will there be any what kinetic energy at C? Because we are looking at that it is going to a maximum height. If it is going to a maximum height, then you must think that it will be in rest at C. Yes, it is at rest. In case of translation, अरे वो ट्रांसलेशन वो घूम घूम के जा रहा है ना, तो वो ट्रांसलेशनली रेस्ट पे है, ऊपर और नहीं जा रहा है, लेकिन घूम तो रहा है ना। तो यहाँ तक बॉल पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक बॉल पहुंचने के बाद आगे जब बढ़ेगा तो यहाँ का समझो जो के का ट्रांसलेशनल पार्ट होगा, ये जो के टी है, दिस हाफ एम वी स्क्वायर पार्ट, ओके, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एम जी एच सी, व्हाइल दिस विल रिमेन एज इट इज। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल पार्ट है वो बस हाइट को जन्म देगा, जो यहाँ पे हाइट उठा रहा है ना वो ट्रांसलेशनल पार्ट दे रहा है, रोटेशनल पार्ट दे ही नहीं रहा है। जब रोटेशनल पार्ट नहीं दे रहा है तो कुछ एनर्जी खा गया ना, तो कुछ एनर्जी रोटेशन में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जितना हाइट से आया था उतना हाइट एस से उठ नहीं पाएगा, तो ये हमको मालूम चल गया। तो इससे हमको ये मालूम चल गया कि एच एट ए विल बी ग्रेटर देन एच एट सी। सो नाउ लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। आपको होप्स जो मैं समझाया ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके देखो। देखो यहाँ पे अब आगे देखो यहाँ पे, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग, यू कैन सी दैट के ए इज इक्वल टू के सी। तो केसी में के में क्या है, जीरो है, केसी में जीरो होगा, नो, व्हाई नो, बिकॉज एज आई एम सेइंग दैट ओनली हाफ एम बी स्क्वायर विल बी जीरो, हाफ एम बी स्क्वायर इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू एम जी एच सी, व्हाइल इट इज स्टिल हैविंग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो खुद रोटेट कर रहा है सी पोजीशन पे, वो ऐसा घूम घूम रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, घूम घूम के ऊपर गया, उसका रोटेशनल कुछ चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन योर रोटेशनल, ओके। उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो एट सी योर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हुआ। कैसे गलत हुआ पता चला, अब काइनेटिक एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ये पता चल गया, लेकिन दोनों का हाइट सेम नहीं होगा। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एच ए बड़ा होगा एच सी से, बिकॉज ओनली योर ट्रांसलेशनल पार्ट इज यूटिलाइज्ड, रोटेशनल पार्ट तो यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। रोटेशनल पार्ट ए से बी में आने के लिए रोटेशन का जो गेन हुआ है, रोटेशनल का जो गेन हुआ है, देयर इज गेन इन योर सम रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी का गेन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, मतलब इट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन गिविंग योर और गिविंग राइज टू योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओनली ट्रांसलेशनल पार्ट जो है, अभी अभी जो मैंने बताया, जो ट्रांसलेशनल पार्ट, ये जो ट्रांसलेशनल पार्ट है बस यही यूटिलाइज हुआ है, तो इसीलिए ये वाला भी नहीं हो सकता, कट गया हमारा दो ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे भी देखो के एट बी इज ग्रेटर देन के एट सी, दोनों ये पहला पार्ट सही है, इस लेकिन कौन सा एच ए बड़ा होगा या एच सी बड़ा होगा, देखो एच ए बड़ा होगा। सो यहाँ पे डी ऑप्शन हमको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। समझ में आया, फील आया, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। ओके, अब फील आया ये कैसे हो रहा है, कोई डाउट है इसमें, अगर डाउट है तो इमीडिएट पूछो। फील आया अच्छे से, ओके, वेल एंड फाइन, हैव अ गुड डे।